Hello guys, welcome to my channel. So in the previous video I have shown you several selectors like class selector, ID selector, then grouping selector. Now in this video I am going to show you how we can use the specific selector. So using the class and ID selector, I can give some effect to the specific element. Suppose I have the same ID name or the class name, then based upon the element I can give some effects. To illustrate more about this topic, let's go with the example. So first let me include the HTML, then the head, then title, specific selector, fine. I close the title and I'll close the head, fine. So within the body, this is the body opening tag, this is the body closing tag, then I close the HTML. Fine, pretty awesome, I guess. So now within this part, first let me save it. This is pick selector that HTML. Fine. Like I'll use different selectors. Now what I'll do within the body, I'll include h1. I'll include the h1 with suppose class center. Fine. This is the h1 tag. Fine. Okay. So I have a h1 with the class center. Now again, I'll include a p tag with the same value of the class, that is center. So what I want, this is the paragraph tag. Okay. So what's my target is that using any particular center value, I will give some effect. So within the head, I will include the style tag. Okay, I will close the style. Fine. And here what I will do, suppose I want to give effect to the class center for the p tag. So for that p dot center, we have seen that for class we will use the dot symbol. So now I have this class center, okay, for both h1 and p. Now I am to give effect to only this paragraph tag. So for that I can use p dot center. तो मैंने यहाँ पे क्या आप लोग देख रहे हो कि मैंने दोनों क्लास का वैल्यू सेम रखा है, सेंटर फॉर h1 एज वेल एज सेंटर फॉर p टैग. तो अब मैं चाहता हूँ कि p टैग में जो सेंटर है, p टैग क्लास सेंटर, उसी में कुछ मैं इफेक्ट दूँ. तो अगर मेरा वैल्यू सेम हुआ तो तब भी मैं दे सकता हूँ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक सिलेक्टर. तो यहाँ पे मैं p टैग को पहले सिलेक्ट किया, p एलिमेंट को, डॉट क्लास नेम. अब उसके अंदर मैं इफेक्ट दूंगा. तो सोचिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. फाइन. तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास मैंने पी टैग यूज किया है, पी टैग डॉट सेंटर, उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर है. अब ये क्लास, ये दोनों क्लास है. ठीक है. अब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा नॉर्मल h1 टैग है. मैंने यहाँ पे भी क्लास सेंटर लिया था बट इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया. बट यहाँ पे मैंने जब p टैग यूज किया तो यहाँ पे मेरा वो इफेक्ट आया कि मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया था तो वो पैराग्राफ सेंटर में आ गया. So like this I can have for the ID selector. This is using class selector, this part. Here I have used inline internal CSS. Yes, using the internal CSS I am using the specific selector. आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे internal CSS यूज करके specific selector यूज किया. मेरे पास दो टैग्स है और आप लोग देख सकते हो दो एलिमेंट्स है, h1 एंड p. अब उसके अंदर मैंने क्लास सेंटर लिखा है और h1 में भी एंड h2 p में भी मैंने क्लास सेंटर लिखा है.
अब मैं ये दो वैल्यू तो सेम हो गया, अब मैं कहाँ पे इसको स्पेसिफाई करूंगा? पहले में हम लोग देखे थे क्लास सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर में कि मैं हम वही वैल्यू यूज कर रहे हैं, डॉट सेंटर या डॉट H4 डॉट H5, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसी को यूज कर रहा हूँ। बट मेरे यहाँ पे दोनों का ही टैग्स का वैल्यू सेम है, क्लास इज इक्वल सेंटर, क्लास इज इक्वल टू सेंटर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, p डॉट सेंटर, यहाँ पे p डॉट सेंटर करके मैं उसका वैल्यू शो कर रहा हूँ। तो जो सेंटर पैराग्राफ टैग के अंदर है उसी में इफेक्ट आएगा। तो ये हो गया आईडी के लिए। सेम थिंग आई कैन डू फॉर द सॉरी, ये हो गया क्लास के लिए। सेम थिंग आई कैन डू फॉर द आईडी। सो सपोज आई हैव बी id is equal to id and this is the bold text, fine। और मैं यहाँ पे एक आई भी दे रहा हूँ, id italic, I is equal to id, fine। id, this is this is the italic text, फाइन। तो मैं यहाँ पे आई को क्लोज कर रहा हूँ। अभी मेरे पास आईडी एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है बी टैग के अंदर और आई टैग के अंदर। हेयर आई हैव यूज्ड द आईडी एट्रीब्यूट फॉर बी टैग एंड आई टैग। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज आई hash then id, okay। So you can see here I is the attribute that I have used, then hash for the id selector, then the value, so id, and then I'll use the some content। So here I let me use color, suppose red, फाइन। तो अभी मेरे पास आप लोग देख सकते हो मेरे पास आईडी एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है बी टैग और आई टैग के अंदर। अब उसी में दो ये भी आईडी है और इसका इसका भी वैल्यू आईडी है, इसका भी वैल्यू आईडी है। अब मैं चाहता हूँ कि आई जो आई टैग के अंदर जो आईडी है उसको मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ। आई वांट द आईडी टैग विच कंटेन्स आईडी इज इक्वल टू आईडी, सो आई वांट टू गिव इफेक्ट टू दिस आई टैग। So that is possible by using the id selector। I, this is the element I, okay, this is the element, now then hash and then the id value। तो अभी मैं इसको अभी सेव करूंगा तो ब्राउजर में आप लोग देख सकते हो कि देखिए अब मैंने दोनों का ही id इज इक्वल टू id था, बट मैं इस आई टैग में मैंने ये id यूज किया है तो वो कलर रेड है, तो टेक्स्ट कलर में वो टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। तो लाइक दिस आई कैन यूज द स्पेसिफिक सिलेक्टर। अगर मुझे सोचिए सबका सब क्लास है और उसमें सबका वैल्यू सेम है और स्पेसिफिकली कुछ मुझे इफेक्ट देना है तो मैं तब ऐसे स्पेसिफिक सिलेक्टर यूज कर सकता हूँ। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे हो, मैं इंटरनल सीएसएस यूज करके भी दिखाता हूँ एज वेल एज एक्सटर्नल सीएसएस। सो लेट्स गो विद एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस यूज करके भी देखते हैं हम लोग कैसे होता है। तो लिंक REL, वहाँ पे स्टाइल शीट, okay, then href I'll use specific.css, okay। फाइन, specific.css। अब मैं इसको सेव करूंगा और एक और I'll create one more file। So here let me refer with this file। I have p.center, p.center, right, center, p.center, और मैं यहाँ पे कुछ दूसरा इफेक्ट दूंगा। You can see here there I have given text align center। Now let me give here color green, okay, fine। Now for this part I have given color red। Now here in external I will include text align center, okay, text hyphen align center, okay। So fine, now by using the specific selector in internal CSS I have used p.center text align center now, and then
for ID selector, using the concept of internal CSS, I have I dot I hash ID color red. Now here I have changed. Let me save it first. Specific dot CSS. Okay, because that was the file that we are using. Specific, you can see here specific.css, here also specific.css. Now you can see here I have ID text align center and p center color green. Fine. So it's I have saved it. Now run and launch in Chrome. So you can see here this is text align center, p center text align center for the internal, and in the from the external we are getting the green color, right? And for this color red, I've told you before also that for B and I the text align center doesn't work, so I can use font size suppose 12 pixel. I save it and go to the browser and then F5. So you can see its font size has changed. Now I can include 25 pixel. Save it and then F5. So it has changed to 25 pixel. So now this font size it's coming because we have included external CSS. मैंने external CSS में font size 25 लिया है और मैंने इंटरनल में कलर रेड लिया है. तो आई एम मिक्सिंग द कंसेप्ट, राइट. तो आप पहले भी देखे हो कि मैं जब भी कोई मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज करके करता हूँ. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेसिफिकली भी मैं एक पर्टिकुलर टैग में यूज कर रहा हूँ. मेरे पास वैल्यू सेम है, क्लास इज इक्वल टू सेंटर, क्लास इज इक्वल टू सेंटर, H1 में भी है, P में भी है. सेम थिंग आपने देखा है कि बी टैग में भी है, आईडी इज इक्वल टू आईडी और आईडी इज इक्वल टू आईडी. अब अगर सेम वैल्यू हुआ तो अगर मुझे स्पेसिफिकली कोई एलिमेंट्स में ऐड करना है तो मैं स्पेसिफिक सिलेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ. तो आप लोग ने देख चुका है कि कैसे मैं इंटरनल एक्सटर्नल CSS यूज करके मैंने इसको अचीव किया. So I guess I have cleared all your doubts. If you have any doubt, please comment on this video. I have told you several times. I used to share my code in my blog, that is webguruanik.blogspot.com. And if you have any doubts, please you can go to the about section in my YouTube. I have linked all the social media. You can ping me in my social media. Thank you. Okay. Take care. Bye.